Jai Hind, Vande Mataram, children. This is our last topic in market, and as well as this session, this is the last chapter. In first term in your examination, first to sixth chapter will come, and today I finished it. ओके आज मैंने इसको ख़त्म कर दिया है या समझो कि ख़त्म हो चुका है. लास्ट टॉपिक इज देयर विच जस्ट नाउ आई विल क्लियर and this chapter will be over, and after that whatever videos will come that is related to revision. So let's start with the monopolistic competition. Earlier we studied the two competition. One is the perfect competition and second one is monopoly. Now we are going to understand the monopolistic competition. So what is monopolistic competition? It is mentioning here, in reality market are neither perfectly competitive market nor pure monopoly market. Means when we enter exactly in the market, we have seen the situation, it is not perfectly competitive, and at the same time we observe that it is not completely monopoly. A mixed form of both is found. There is the coexistence of partial monopoly and partial perfect competition in market, which is known as monopolistic competition. So you can say the monopolistic competition is a combination of perfect competition and monopoly. दोनों का संयुक्त उपक्रम है. You can say like that way, it is a joint entrepreneurship, you can say in another word. The major type of market observed in monopolistic. Okay, this kind of market means the partially perfect competition and partially monopoly. You can see the combination of both in monopolistic competition. So definition is given by Professor Chamberlain here. He is saying that perfect competition and perfect monopoly coexist in a market known as monopolistic market. Okay, so monopolistic market is that where we can see the existence of perfect and as well as monopoly competition. Second, Mrs. Robinson is saying, if each firm establishes monopoly and also compensates the same time, the market is called the perfect competition. Means when market is play the game with monopoly and perfect competition, then that type of market is called the monopolistic competition market. Now what are the features of monopolistic competition? First is there few numbers of seller and more numbers of buyers. Okay, means sellers are in less proportion and buyers are in more proportion. You can see the example of telecommunication market today. Okay, there is Reliance, there is Airtel, there is we, Vodafone and Idea both now merged with each other. So certain organizations are there who manipulate the market, and so many buyers are there and they have the limited choice. Either they have to move with Reliance or we or Airtel. Is it clear? Or someone else, or BSNL you can say. Okay. In monopoly, there is only one seller, while in monopolistic competition, there are many sellers. It remains there are neither numerous sellers nor there is only one seller. Okay. In monopoly competition, there is one seller and many buyers. Here, few seller and many buyers. That is the basic difference. You can bifurcate like that way. Is it clear? Due to
in the monopolistic competition, the perfect competition become important. Means the backup of perfect competition is essential for the monopolistic competition. Next feature is product differentiation. See, in monopoly, the same kind of product you see in the firm, because only one firm is there, and in perfect competition you will see the product, same kind of product in different form, okay, or different sellers. But here little variety you will see here, okay. So this is a distinct characteristics of monopolistic competition. It means that the product is different from another product. Just take the example of toothpaste industry. Okay, FMCG industry, you can say in another word, Patanjali and Ved Shakti. Okay, different products are there, but their features are same. Is it clear? In the term of form, quality and nature, when a producer produces a product, there is possibility that there are minor difference in the product in the term of form, fragrance, taste, shape, weight and quality. Due to these minor difference, our product can be called different. Okay. What is the difference between Veda Shakti and Patanjali? If you do the paste, you will see the little change. There is little sweet taste in Veda Shakti. It is not you find, but another components are same, and that's why each and every product क्या बोलते हैं, दावा करता है क्या हम दूसरों से अलग हैं. We are different than another one. Is it clear? Next, like perfect competition, here also free entry and free exit of the firm. There are the free movement of the firm and unrestricted entry and exit of firm. The supernormal profit attract the firms freely in the market. Even when the firms suffer losses, they are free to exit from the market. If profit is there, each and everyone will stand up in the market. If suppose they are feeling that there is loss, they will shut down. The firm are not attracted by the normal profit. Okay, so they do not enter the market. Similarly, the firm in the market do not exit. They are not suffering losses. Next, selling cost. The expenses done for selling the product are called the selling cost. You know that very well. The selling cost include the packing, making the product attractive, sell taxes, transportation expense given to the wholesale retail, means each and every cost is included in that. Showroom expense, even advertisement, everything. A specific amount extended for sales, price, gift, and most important being the advertisement cost, which I earlier explained just now. The selling cost does not include the production expenses. The selling cost is a typical characteristics of monopolistic market, because each and every firm want to exist. उनको अपनी existence maintain करनी है. They want to do that, otherwise they will be thrown out from the competition. And due to that reason, each and every time they do something innovative, something new to make their existence in the market. They want to show their presence in the market. Yes, हम भी हैं, हम भी competition में हैं भैया. Okay, this type of thinking, and that is the subject of selling cost. The selling cost does not include the production expense. Okay, the selling cost is a typical characteristics of monopolistic market. This is not seen in monopoly and perfect competition. In this monopolistic competitive market, the seller try to attract the consumer through the selling expense. The product different in the market gives the particular identity to the product. So there can be possible for selling cost. For example, mobile phone, soaps, etc. have the different advertisement. You know that very well. There is no
need to explain you all these things in long way, because if you watch the advertisement, immediately you will realize about the monopolistic competition. Competition other than price. There is no matter of price, but other matters are there, how to grab the market. That is the most important thing rather than price. Monopolistic competition is competition of price and also the competition other than price. The seller keeping the price fixed, try to attract the consumer by advertisement, compete by modifying the quality. The seller try to attract the consumer and compete on the basis of factor other than price. Okay, so all these are little point which just keep in your mind, and continuously we are seeing this. Okay, see now further, आगे और हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं. If customer is not aware regarding the market, then definitely he suffer. So it is very essential that customer should be very careful, very alert regarding the market. Market को लेकर वो बिल्कुल attentive होना चाहिए. He should know the price of competitive product. Then only he can enjoy the well bargaining in the market. Is it clear? So the buyer and seller do not have the complete knowledge related to the market. They are not aware of identical and substitute product. So the price of identical or substitute product are either high or low. Okay, that's why I told you earlier, if he is not aware of the market, then definitely there may be chances that he will be cheated. साहब इसके जैसे ही लेके जाओ, okay, and फिर they give you idea of something and you get idea of something. Okay, it become like that way, resulting into the different price of substitute product. There are many forms of product producing identical or substitute product. The firm compete by creating a new identity of the product and thus establish monopoly like situation, which you can see in the market of mobile phone, in the market of telecommunication. Okay, you can understood by this example. This creates a monopolistic competition. Okay, so few seller, many buyer. Okay, now next one is the oligopoly. Okay, so oligopoly has originated from the Greek word oligos, which means few, and polyon, which means the seller. Okay, or you can say the power. So oligopoly means the market having few producers. Oligopoly include the market having the few producers which sells identical or substitute product. There is extreme competition in the market. In another word, you can say the oligopoly is the extended form of monopolistic competition. उसी का ही एक बदला हुआ रूप है. Is it clear? According to Professor Stigler, oligopoly is the market in which the firm decides its policy according to the behavior of competitor. बाजू वाला क्या कर रहा है? If he has changed its selling price, immediately change will done by the competitor. Okay. डोमिनोज ने क्या किया है? इमीडिएटली दूसरा जो भी पिज्जा सेलिंग करने वाला होगा, जो भी उसका कॉम्पिटिटर होगा, इमीडिएटली वो नई पॉलिसी ला के रख देगा टू कॉम्पीट विद. आप स्पेशली व्हेन यू सी द एडवर्टीजमेंट, स्पेशली हु आर स्पॉन्सरिंग द क्रिकेट मैच, आप वहां पे देखो क्या थ्रॉट कट कॉम्पिटिशन चलती है. पेप्सी एंड कोक, बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली. ओके, एक ने ये स्कीम लेके आया, इमीडिएटली दूसरा दूसरी स्कीम लेके आ जाएगा. बराबर है, सामने वाले को मार्केट में से उड़ा के फेंक दो. दैट इज द ओलिगोपोली. ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Benumor, oligopoly is a market in which even a small number of sellers out of the total less sellers are enough to affect the price of the product. Effect and affect both are. So what are the characteristics of oligopoly? There are few sellers, कुछ ही seller हैं, बहुत गिने चुने. परफेक्ट में तो थोड़े ज्यादा, सॉरी मोनोपोलिस्टिक में तो थोड़े ज्यादा थे.
लेकिन यहाँ पे उससे भी और कम। परफेक्ट में अगर आप समझो मोनोपोलिस्टिक में अगर 15-20 लोग अगर प्रोड्यूसर हैं तो यहाँ पे हार्डली 2 to 3 लोग ही प्रोड्यूसर है, नॉट मोर देन दैट. So few seller and numerous buyer. The number of seller and producers is less in market. The number of firms is limited. The number of firms ranges from more than 2 or less than 10 or 20. Due to this, few numbers of seller have monopoly control over the market. The number of buyer is numerous in the market. मतलब buyer भी बड़े choosy होते हैं, इस market के buyer भी ज़्यादा नहीं होते हैं. So importance of individual buyer is negligible, due to which the buyers cannot affect the market price. Similar or substitutable product. There is a sale of identical or substitute product in the oligopoly. When the firm in a market produces the sell identical or substitute product, it is oligopoly. For example, product like salt, कॉर्ड, ऑयल, टी. अब ये थोड़े आउटडेटेड एग्जांपल हो गए. सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बोला ना आपको, टेलीकम्युनिकेशन मार्केट का आप लो, सेल फोन, सिम कार्ड देने वाले जो भी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल. ओके. ड्यू टू विच द बायर कैन नॉट अफेक्ट, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, मोटरसाइकिल कोल्ड ड्रिंक का तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, पेप्सी एंड कोक, बेस्ट एग्जांपल. क्या एक दूसरे की खींचते हैं, क्या एक दूसरे की उड़ाते हैं, बराबर है. उसी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर कुछ लोगों का जो है पूरा मार्केट पे होल्ड चलता है. ओके. नेक्स्ट, एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म. द मार्केट ऑफ ओलिगोपोली, द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द फर्म इज फ्री or regulated according to the type of oligopoly following. If there is free oligopoly in the market, then there is free entry and exit in the market. While the oligopoly is restricted, then entry of exit is regulated. Next, selling cost. How to determine the price? The expenses done on selling the product are called the selling cost. फिर वो advertisement, custom charge, whatever is there, that everything was taxes, government expenses, everything is included in that. Labor cost, whatever is there. Transportation expense, okay, given to the wholesale and retail trade profit. Showroom expense, specific amount expanded for sales price, gift. Most important being the advertisement. Means मैं बोल रहा हूँ ना आपको, if you study the oligopoly, you will not get differentiation between the oligopoly and monopolistic competition. Almost आपको दोनों सेम लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक पतला सा bifurcation है. And what is that bifurcation? यहाँ पर जो सेलर है, बराबर है, वो मोनोपोलिस्टिक के कंपेयर में कम है. फर्स्ट थिंग इज दैट. यहाँ पर जो बायर है, दे आर वेरी, दे आर नॉट मास, दे आर क्लास बायर. कुछ लोग ही उसको अफोर्ड करने वाले लोग हैं, हर कोई उसको अफोर्ड करेगा नहीं. ओके. जैसे एप्पल का एग्जांपल लो आप, आईफोन क्या हर किसी के पास में है क्या? तो उसका जो सेलर बायर क्लास रहेगा, वो बायर क्लास कैसा रहेगा? वो क्लास बायर क्लास रहेगा. कुछ लोग उस मार्केट को इन्फ्लुएंस परचेजिंग मामले में कर रहे होंगे. द सेलिंग does not include the production expense. There is an extreme competition in oligopoly, so the selling cost become the important factor in the market. The seller try to attract the consumer through the selling expenses. The product difference in the market gives a particular identity to the market, so there can be possibility of selling cost. For example, advertisement of television, car, etc. And interdependency. This is the last characteristics of monopolistic oligopoly competition. The seller and producer are very few in number in this market. The seller or the producer does easily gain the important information about other seller or producer. दूसरे की क्या सिचुएशन है, क्योंकि कम लोग हैं तो आराम से एक दूसरे के प्राइस को इंटरेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मेरी लैंग्वेज में उसको काट सकते हैं. Is it clear? The seller or producer can thus easily gain the important information about the seller or producer.
The seller and producer special focus on the quality and type of the product to attract the consumer. For example, television, car, etc. Producers or seller, so the firm decide to price quality or type of product based on the behavior and the competitors and that depend on them. And last, that is the price stickiness और किंग डिमांड कर्व। इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर ये चैप्टर जो है यहाँ पे आपका ओवर। चलो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं जो है थोड़ा सा माइथोलॉजी में जाता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि जब हनुमान जी जो है संजीवनी हनुमान जी जो है जब सीता जी की खोज में जो है जब लंका जा रहे थे तो ड्यूरिंग दैट टाइम रास्ते में जो है उनको सुरसा मिली और फिर क्या हुआ, सुरसा ने जो है उनको बोला कि भाई मुझे जो है देवताओं ने को का ये वरदान है कि जो भी यहाँ से ऐसे पास ऑन होगा वो मेरा आहार है, ओके, वो मेरा खाना है, तो तुम्हें मेरे मुंह में से पास ऑन होना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वहां पर जो है फिर क्या हुआ कि सुरसा ने जो है अपना मुंह बढ़ाना शुरू किया। अब सुरसा जो है जितना मुंह बढ़ाती थी हनुमान जी उससे डबल होते थे, बराबर है। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कभी रूप दिखावा, बराबर है। सत योजन ते ही आनंद की ना, 16 योजन जितना उसने जब मुंह बनाया, बराबर है, तो तुरंत पवन सुत 32 की ना, बराबर है, उससे वो डबल हो गए। और ये फिर अब ये कंपटीशन कहाँ जाके खत्म होगा। और फिर क्या हुआ, उसने जब इतना विशाल मुंह बनाया तो हनुमान जी ने ऑन द स्पॉट छोटा मुंह बनाया, एंट्री मारी, बाहर आ गए। अब आप यहाँ पे मुझे बोलोगे कि सर इसका मोनोपोली के साथ में क्या रिलेशन है, बराबर, सॉरी ओलिगोपोली के साथ में क्या रिलेशन है। रिलेशन था, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन यू। इन ओलिगोपोली चिल्ड्रन, यू नो वेरी वेल, देयर आर वेरी फ्यू फॉर्म्स। ગુજરાતીમાં કેવું ને, શુદ્ધ ગુજરાતીમાં એકબીજાને વેતરવા માટે કઈ પણ પાયરીએ જઈને બેસી શકે છે, છેલ્લી કક્ષાએ જઈને પણ બેસી શકે છે। એન્ડ એટ ધેટ ટાઈમ વોટ હેપન, देयर इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ प्राइस। एक अगर इतना प्राइस घटाएगा तो दूसरा और ज़्यादा घटाएगा, क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ानी है। यू नो वेरी वेल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। If price has falls, demand has rise. Yes. And what happened exactly? And due to that competition, okay, जो डिमांड का आपका ऐसे जाना चाहिए था, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि दोनों के दोनों फॉर्म उसके आगे जो है अपनी प्राइस को घटा सकते नहीं है, एंड दैट इज द सिचुएशन ऑफ लॉस। तो वहां से जो डिमांड मूव करती है, दैट इज कॉल्ड किंग। मुझे सिर्फ ये समझाना था आप लोगों को। तो वो जो कंडीशन आ गई सुरसा की, जहां पे अब उसके आगे ना हनुमान जी का बढ़ना ये पॉसिबल था, ना सुरसा का मुंह बढ़ाना पॉसिबल था, वहां से हनुमान जी ने क्या किया, रिट्रीट किया। तो यहां पर भी, यहां पर जो है सेलर को रिट्रीट करना पड़ता है। ही इज नॉट एबल टू फर्दर रिड्यूस द प्राइस एंड ऑटोमेटिकली इट इन्फ्लुएंस द डिमांड। तो जहां से वो डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द किंग। उस पॉइंट को किंग बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग में रखना। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस, बराबर। मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया, लेकिन टेक्सुअली लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, द नंबर ऑफ फॉर्म इज लेस एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। If any firm decrease the price of the product, then according to the law of demand, due to comparatively cheaper price, the product there is more demand. तो उसका demand ज़्यादा हो जाएगा of the product in the market, and then particular firm compared of other firm. There is decrease in the demand of the product sold by the firm. If the competitive firm do not wish this situation,
then they also decrease the price. लेकिन there is limitation. Okay, price to stay the competition. At the end the price of the product reaches at the nominal level. सबसे कम में आया था। हनुमान जी का मुंह तो बहुत, सूसा का मुंह तो बहुत बड़ा हो गया था, हनुमान जी भी बहुत बड़े हो गए थे, लेकिन उसके अंदर हनुमान जी क्या हुए, छोटे हुए। तो यहाँ पर भी द प्रोडक्ट रीचेज एट द नॉमिनल लेवल, एकदम लोअर लेवल पर आ जाता है, उस लेवल पर कि उसके आगे जो है फिर उसको जो है प्राइस लेस करना पॉसिबल होता नहीं है, एंड इट बिकम इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द प्राइस फर्दर। ऑन द अदर हैंड, if the firm increases the price of the product, then the demand, अब जितनी डिमांड अगर उससे ज्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई भी सामान खरीदेगा नहीं। then that products decrease and the competitive firms are profited. Thus as a nominal price it resistance to change and that demand curve become kinged मतलब अपने नॉर्मल सिचुएशन से क्या हो जाना, थोड़ा डाउन हो जाना, and that is called the king, and that is called the kinged demand curve. And here the situation of market and different competition I clear. Part 1 it is completely we cleared here. अब इसके बाद के आपको 3 से 4 और वीडियोस मिलेंगे, and in that videos complete revision हम लोग कर लेंगे एंड सब कुछ अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को कोई पीडीएफ भेजा नहीं है, बराबर है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट आई विल सेंड विथ यू, बिकॉज ये काम जो है हमारे हार्दिक सर जो हैं वो जो है कर रहे थे, तो मैं जो है अभी आप लोगों को जो है 2-3 पीडीएफ अब आगे भेजूंगा, उसको ढंग से स्टडी करना एंड इट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम, बराबर है। आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आपको 2-3 इसमें आंसर्स भी लिख के मैं दूंगा कि हाउ टू राइट द आंसर्स। इज इट क्लियर? सो हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, दिस पार्ट। ओके, नाउ फ्रॉम सेकेंड पार्ट वी विल स्टार्ट विद द 7th चैप्टर। हम 7वें चैप्टर से हम अपने आप को आगे मिलाएंगे। लगभग अब मेरे ख्याल से अगला वीडियो भी बच्चों आएगा प्रॉबेबली अब जो है नवंबर महीने में आप लोगों को जो है मिलेगा। लेक्चर्स के वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो भी मिलेंगे वॉट एवर वीडियो नाउ यू विल गेट, यू विल रिसीव, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर रिविजन। तो जिन लोगों का कुछ पीछे छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो दे हैव ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इट। ओके, एंड डोंट मिस इट, एंड वॉट एवर I think so you have to communicate with us. No single children. हमारे साथ में आप लोग बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके क्वेरीज जो है शेयर कीजिए, सो वी कैन एक्सप्लेन यू मोर बेटर वे। अगर आपको कहीं कुछ कमी लगती है तो उसको भी जो है हमारे साथ में शेयर कीजिए। क्लास में तो अगर हम बाई मिस्टेक कुछ ऐसा गलत लिख देते तो हम बोलते भाई सर ये रॉन्ग हो गया क्या क्या। तो यहाँ पर तो हम पूरी अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन उसके बावजूद भाई मैं बहुत बार मस्ती में बोलता हूँ ना, मामा भूपा मानस मात्र भूलने पात्र। तो कभी कुछ भूल हो जाए या कुछ यू फील दैट कि इससे और कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ बेहतर हो सकता है, तो दैट ऑल्सो यू कैन सजेस्ट। वो भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। हमारे सबके नंबर्स आप लोगों को स्कूल से अवेलेबल हैं, दिए हुए हैं, तो एटलीस्ट कम्युनिकेट कीजिए। ओके, और बताइए कि आप लोगों के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, बिकॉज यू ऑल्सो हैव द यूनिक आइडिया विथ यू। ओके, अर्लियर आई सेड दिस थिंग, यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, तो बाय नेचुरल योर ब्रेन शुड बी यूनिक देन अनदर। दूसरों से तो अलग होना ही चाहिए आपकी थिंकिंग, आपका जज्बा। ओके, सो सी यू हियर। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।